हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવીશું ઘઉંના લોટના ખાખરા। આપણે ખાખરા બનાવવા માટે લોટ બાંધી લેશું। એક વાટકો ઘઉંનો લોટ ઉમેરી દેશું। એક ચમચી હળદર અને મીઠું એડ કરી દેશું। एक चमची जीरु लईने हाथ में मसरीने एड करी देशुं। एक चमचा जेटलुं तेलनुं मोरण एड करी देशुं। थोड़ुं थोड़ुं पाणी नाखीने लोट बांधी लेशुं। बहु कठण लोट आपणे नहीं राखी, मीडियम ठीक राखीशुं। आ रीतना लोट बांधी एटले आपणे सारी रीतना वणी सकी। लोट आपणे बांधी लीधो छे। 10 થી 15 मिनिट आपणे लोटने रेस्ट आपी देशुं। एमां थोडुं तेल नाखीने लोटने मळी लेशुं। પછી તેમાંથી થોડો લોટ લઈને આ રીતના ગોળ લુવા બનાવી લેશું। પછી તેમાંથી એક લુવો લઈને લોટવાળું કરીને વણી લેશું। वच्चे वच्चे लोट लईने वणी लेशुं। जेवी साइजना बनाववा होय ने एवा तमे बनावी शको। आने आपणे आ रीतना पातळो वणवानो। जेटलो पातळो वणाय एटलो पातळो वणी लेवानो। आटला आपणे वणवाना आ रीतना। अडधर विनाना बनाववा होय तो अडधर विनाने बनावी शको तमे। आ रीतना आपणे बधा वणी लेशुं। तवीने गरम थवा देशुं। तवी गरम थई जाए पछी गैस ने आपणे धीमो कर नाखवानो। पछी आमां एक आपणे नाखी देशुं। एकदम धीमा गैसे शेकवानो छे आने। पछी आने बीजी बाजू फेरवी देशुं। आ रीतना कपडाथी दबावीने शेकी लेवानो। खाखरो शेकाता 3 થી 4 मिनिट जेटलो समय लागशे। केम के आने धीमा गैस पर शेकवानो होय ने एटले। कपडाथी न करवुं होय तो तमारे आ रीतना लाकडानुं आवे एनेथी करी शको, पण कपडाथी वधारे ईजी रहे। आने एकदम आ रीतना शेकी लेशो, दबावी दबावीने बे बाजू। आ रीतना डिजाइन पड़वी जोईए एमां, तो आ रीतना शेकी लेशुं आने। तेज आपणे आ रीतना घी लगावी लेशुं। आमां आपणे घी लगाववुं होय तो लगावी शकी, ऑप्शनल छे, न लगावो तोय हाले। આપણે બધાય શેકી લીધા છે, એકદમ કડક થઈ ગયા છે। તો તૈયાર છે આપણા ઘઉંના લોટના ખાખરા। જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનનું બટન દબાવી દેજો। ફરી મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।